Good evening, everyone. So I think it's 7 people have joined. Is this PPT2 visible, everyone? Yeah, it's visible, sir. Okay, thanks. So I just took this question from a previous year. If you guys have seen, there was a question in subjective that was like, what are the function of camera movements in films? So many of you know the what is camera movement is, and I think everyone knows that things. But what I wanted to discuss over here, how you explain these things. Is it 20 marks? Is it for 20 marks or 10 marks? Anyone जिसने भी question देखा है? Let me check it out once again. Give me 1 minute. Just let me find out. Yeah, it's 10 marks question. One year. Sorry guys. अभी दिख रहा है ये स्क्रीन? क्या कहा था? Now it's visible, no? Yes, sir, it's visible. Okay, so let's Question. start. Okay. So I think everyone have seen this question, and so that's the things. So you know the camera movement, what the moment is. So just I wanted to ask to everyone what it means by the camera movement. Once it comes to you that what is camera movement, just explain it in one line. क्या होगा ये? What does it mean? The camera movement is. Anyone बताओ यार? There's only 10%, so one by one, just explain it. चलो मैं नाम ही ले लेता हूँ, आदित्य. Yes, sir. Yeah, what is camera movement? Camera movement is basically following the characters and their actions and what's important for the story, conveying through movements. So basically, through movement, you are conveying the story, right? That you wanted to explain, right? Yeah. Through the movement, you are just portraying the like a story, right? That you wanted to say? Yes, sir. Okay. Now is the Anmol Maria. Yes, sir. Yeah, what is camera movement? What does it mean? The camera movement is basically uh, how we represent a composition by moving a camera in a scene. Something like that. Okay. So basically, through the movement, we are making composition. That you wanted to say. So revealing different different aspects of compositions, or maybe by help of it, we can specifically convey a story, or it may help in storytelling. Okay, ठीक है, right. Okay, next, Arnav. Sir, any intentional movement in physical form of camera, which may change in any axis, pan, tilt, any kind of movement that will result, that is intentional,
and it's specifically done to promote any emotion, amplify any emotion, or any specific task. There are different kinds of movements, and there are different purposes of doing that. Great. Sure. Gautam. Sir, camera movement is the very important aspects of storytelling, and camera is moved if the character moves, and to establish the locations, and also to establish the psychological space of the character the camera is. Mudit. Mudit not listening. Ranveer. Sir, it basically the movement of a camera through its axis, or something to convey a story, or convey a story, or convey some message in that frame. Okay. Sorry. Next, Shivam. Hi, sir. Good morning. Good. So basically, Good. camera movement is a physical movement of camera on the screen. With on screen, it's more like with regard to spatial attributes to convey or drive or evoke certain emotion with respect to visuals. Yeah, I think yeah. Okay. Good. Let's go. Vasudha. So basically, it provides dynamism to your frames, and it can move you from frame to frame. There are speed changes, there are directional changes, and yeah, they evoke different emotions in you. और कौन बचा है अभी? अभिनव. अभिनव नहीं सुन रहा. चलो. Is anyone left? The thing is that overall, everyone have their own, the view when you are explaining it. The thing is that you are just listening. You're just listen my question only. What I ask you, what is camera movement? Just see yourself when you are moving your cameras. Either don't go with the technical things, either the pan, tilt, and anything else. Don't go with that. Suppose karo tum just follow, you're just following with the camera. What you noticed? What is changing over there? क्या change हो रहा है? What is changing? It's just the whatever the camera movement. It's just the techniques to change within the frame. Frame में change हो रहा है, right? And when you are changing the frame, what's changing? Your perspective is being changed. आपको पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है हर एक टाइम पे जैसे ही कैमरा मूवमेंट हो रहा है आपका. Well, it's not fixed. So once your camera will be in movement, right, or in motion, the physical movement, what happened? Every time your perspective will not changed. The third things और क्या होगा? Yes, so can I speak, sir? Abhinav. Yeah, no, बोलो. या सर, तो जितना भी इन लोगों ने बताया वो, बट ऑल्सो कि जैसे जूम इन, अगर कोई कैमरा मूवमेंट में जूम इन है तो कोई भी सब्जेक्ट के इमोशनल सेंस को डिपिक्ट कर रहा है, या फिर कोई पैनिंग शॉट है तो उसके चेज को डिपिक्ट कर रहा है, समथिंग लाइक दैट. अगर कोई क्रेन शॉट है तो उसमें लॉन्ग टेक्स आ जाएगा. ठीक है, समझ गए. Somehow हुआ क्या है, आप लोग क्या कर रहे हो, क्या आंसर क्या दे रहे हो पता है? You're just explaining the specific part of camera movement that can convey the psychological and emotional effect. मैंने सिर्फ टेक्निकल वर्ड पूछा था, आप लोग ज्यादा क्या हुआ, आप साइकोलॉजिकल इफेक्ट और टेक्निकल इफेक्ट पे ज्यादा चले गए. इट वाज अ सिंपल टर्म्स फॉर द कैमरा मूवमेंट इज क्या होता है कि सबसे पहला काम, देयर इज अ नो चेंज इन, देयर विल बी द चेंज इन फ्रेम एंड देयर विल बी चेंज इन पर्सपेक्टिव. पर्सपेक्टिव चेंज होगा, फ्रेम चेंज होगा.
तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? The camera movement allows you, right, to shift audience point of view without cutting. कहीं पर बिना कट के क्या होता है? Just shifting your point of view or not? ये यार मैं कैमरा ऑन नहीं, सॉरी, what happened? Sorry guys, there's a problem. Sorry guys, मेरे कैमरे में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आई थिंक. हाँ ठीक है, राइट. हम्म. ओके, सो वेयर वी वाज. सो क्या ये होता है कि विदाउट एनी कटिंग इट्स चेंजिंग योर सेंटर ऑफ इंटरेस्ट होता है, और just draw the attention of viewers or changing the viewers attention towards any specific things. कोई कट लगता है नहीं ना, that's a camera movement, right? तो अभी क्या हुआ, मैंने सिर्फ मोमेंट आपसे पूछा था, you started explaining the aesthetic point of view. तो रीजन इज कि मैं इसलिए इस क्वेश्चन को लिया था कि ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. सिर्फ फंक्शन पूछ रहा है, फंक्शन कम्स इन विच पार्ट? जो कैमरा फंक्शन इज मोर अबाउट टेक्निकल थिंग्स, राइट? जो क्वेश्चन है टेक्निकल थिंग्स के बारे में पूछ रहे हैं. हाँ, somehow certain points you can explain was the psychological effect of that particular movement, but ये जो क्वेश्चन है more about technical things, कि आपको कैमरा मूवमेंट के फंक्शन पूछ रहा है. जस्ट आस्किंग द फंक्शन, ये नहीं पूछ रहा है कि इम्पैक्ट ऑफ दैट फंक्शंस, उस फंक्शन का इम्पैक्ट क्या है, राइट? क्या कहीं पूछा है इसमें? इज देयर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि the certain camera movement ka what is the impact of that certain movement or whatever the, yes, कहीं पर है इस क्वेश्चन में? सो बेसिकली इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि क्वेश्चन जो पूछा व्हाट एवर दे आस्क, जस्ट राइट दैट मच ऑफ आंसर्स. तो इसमें मुझे जहां तक लग रहा है ये इट्स मोर अबाउट द टेक्निकल थिंग्स. तो कुछ पॉइंट्स हम निकालते हैं क्या क्या हो सकते हैं कैमरा फंक्शंस के और कैमरा. So for this question, the purpose of the movement and like that only we can. That's enough, Yeah. no, sir. For this question, the purpose of camera movements like the Yeah, purpose of visualization. camera movement, obviously you have to write that. But firstly, the camera movement के functions क्या क्या? How many functions are there when you wanted to move the camera? How many functions were there, or which kind of function is there? Is there only pan or moving the camera? There is a physical movement of camera, right? So it means any kind of changes within the frame, that is movement. Anytime is the perspective have been changed, there is a movement. Either there is no physical movement, camera कहीं पर खड़ा है, pan left, pan right हो रहा है. In horizontal axis, is it movement, right? So how many types of the movement of camera, that's the function. And what's the impact of that things? That could be the one liner or two liners, right? But if the question is like that, what was the impact of that particular camera movement, then you can write more about the aesthetic sign, or जो भी इसके whatever you guys are discussing over there, the psychological impact और जो भी चीजें पढ़ रही है उसके बारे में आप बात कर सकते थे. But this question is more about technical things. तो let's start. Pan, you know guys what is pan is, right? So इसके फंक्शन क्या क्या हो सकता है? Just 1 second guys, 1 second. Follow the action, right? Panning is often used to track or follow a subject movement horizontally. This is useful in situations where the subject is in motion and you want to maintain focus on it. कि suppose किसी character को follow करे, that will be the pan, right? Follow the action, किसी भी particular, there is no new information basically, कोई नया information नहीं है, but you just following the character, following the action, वो हो सकता है. The another one is reveal information. Am I using something pan to reveal the new information, new frame, right? तो इंफॉर्मेशन रिवील करने के लिए भी हम यूज करते हैं. द थर्ड वन इज स्कैन अ सीन, like you just wanted to establish some new information, right? Or the new areas. वहां पर क्या करते हैं? पैन करके ही एस्टैब्लिश करते हो ना.
Anyone have any movies reference for the panning shot? Roma, sir. Roma. Which shot you are talking about? The initial start, the interior Initial of the shot. When house. CS started from here to there, every room. Yeah. What happened with that shot? क्या हो रहा था उस scene में? Is it revealing the information or a scan a scene? What it was? Yeah, it is revealing, and we are At the getting the same idea point, about both the things happen house. over there. In the same shot is the revealing shot, also a scanning a scene to establish those all geographical factor that the relation with each other, right? Yeah. The relation with that maid, what's the name of that maid is how he related to each and every one. So जितने भी घर में वो जा there is certain pan ही था ना पूरे shot में, right? So at same point वो reveal भी कर रहा है और एक connection भी build up हो रहा है, right? So that is the function basically. ये आपके pan के functions हैं. एक मिनट, एक सेकंड दे दो guys. School man. Okay. नीचे रख दो मैं 5 मिनट. ओके गाइस, ये पहला हमने क्या डिस्कस किया था? द फंक्शन की हाउ इट फंक्शन, राइट? इसका फंक्शन क्या होता है? द अनदर इज द इफेक्ट ऑफ इट, इन विच यू कैन डिस्कस इन इफेक्ट पार्ट की जो आप कह रहे थे कि एस्थेटिकली हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, और द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग्स इन विच यू कैन डिस्कस इट. सो इसमें क्या क्या हो सकता है? इट्स लुक, देयर इज ओनली 2 पॉइंट्स, मे बी देयर विल बी मेनी पॉइंट्स. इट्स योर ऑब्जर्वेशन हाउ मच यू वांटेड टू राइट. मे बी देयर विल बी द 20 मार्क्स, ज्यादा हो सकता है. सो व्हाट्स द इफेक्ट ऑफ पैनिंग, कि पैन करने का इफेक्ट क्या होता है? One is continuity. Continuity means there is a no cut at all. So, right. So there is a seamless movement is over there to create certain continuity की. Suppose करो to establish the house. Right. So क्या होगा? There is certain pan from one angle to another angle. Is it establishing those things or not? एक पैन का एग्जांपल मैं दिखाता हूँ. 1 second. Give me, where it was. Once there was a link. I'll show you. Yes. No. सॉरी वो एक्चुअली आ नहीं पाया. ओके, ब्रेक में मैं देखता हूँ वो कहीं मिलता है तो. डाउनलोड था, जस्ट फॉरगेट टू कॉपी इट ओवर हियर. ओके लेट्स, मिलता है तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को ब्रेक के बाद. द अनदर वन इज टू सरप्राइज और अर्जेंसी. मींस इफ देयर इज अ फास्ट पैन, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड whip pan or Swiss pan. So if there's a certain kind of unexpected events or any urgency, do you feel that there will be the slow camera pan will be there?
or it will be fast. It will be faster, right? So the line is the surprise or urgency. Well, you can use another words or maybe the different elements that you can feel. तो यहीं पर इसी लाइन में तुम उसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, दैट द स्विच पैन और whip पैन जिसे कहते हैं हम. सो आई थिंक whip पैन का एग्जांपल है, आई हैव जस्ट शोइंग यू दैट. ऑडियो नहीं जा रहा होगा ना? चलिए, हटाओ. So in fast movement और fast pen को explain करने के लिए you can use this the whip pen का example use कर सकते हो. नित्य प्लीज. Sir, here in tilt and pan, that here it's mentioned that the tilt movements are from fixed position. That means the handheld also we can use, no, sir. But look, for the movement techniques, the handle is the another movement techniques. So when it comes to pan, Because it should be in because fixed the question only. was the function of camera movements, right? So same pan and tilt, even the you can take it on the crane also, no? And the jib also we are doing same things. We can on jimmy jib, we can take that the tilt up and tilt down shot. Even on the steady cam, you can do it, right? In the dolly shot, the same dolly shot, you can do it with the gimbal, but the impression is different. When you are taking shot through the steady cam, when you are following the character with the steady cam, when you are following the character with gimbal, when you are following character with handheld, when you are following character on crane, it's a totally different impact of it. The visually, it's totally different. It will not the same. The term will maybe remain same. You're following the character, so it will be the dollying, right? Term will be same, but the impact is different. कि हैंडल शॉट में पैन हो सकता है, राइट? हैंडल शॉट में टिल्ट अप कर सकते हैं.
The same things you can do with the crane also. On the crane, you can do the pan, you can do the tilt, right? That's a movement. But crane have the different impact. You got it? Yes, sir. So the pan means it should be fixed, rigid. Yeah, obviously, it will be fixed. Oh. On the vertical axis, sorry, on horizontal axis, it will fixed. Oh, sorry, in horizontal axis, it will move. Move Like and vertical, it's fixed. 180 degree to 360 degree, but physically there is a no movement at all. When it will be pan, right? Okay. At that point of time, there is no physical movement. So it will be on same position basically. From there, you can move your camera from in the horizontal axis, right? That's the pan. But if you on like the gimbal or something else, you are doing it same things, right? On the gimbal, you are asking that question, right? On the gimbal, if you are penning those things. So now it's the different things that you are taking. You are following the things. You are following the character. At the same point of time, you will tilt up, tilt down, right? Maybe. Yeah. So second one. Okay, tilt a vertical movement from a fixed position. Again, it will be the fixed. But vertically, आपका camera क्या होगा? It will be tilting up or tilting down. But again, there will be no physical movement of camera. Camera axis will remain same. Camera जो है अपने ही axis पे रहेगा. It won't change. Position move नहीं होगा. Position will remain same. Perspective may be changed. The position remains same. So it will used for the vertical information देने के लिए आपको ज्यादातर यूज होता है वर्टिकल information आपको again if you guys have watched Roma the same things now have you seen that the vertical information revealing and there's a camera tilt up or tilt down. Yeah, the initial and the final. Yeah, so again you guys got the same example two example from same films, the tilt up and the panning or the effect of it. But पढ़ लीजिए इसे. Okay, चलिए इसको पहला एग्जाम्पल पढ़ लिया सबने. डिसओरिएंटेशन का एक एग्जांपल बताता हूँ. यू गाइस हैव सीन जोकर, राइट? Yeah. जोकर देखिए सबने. What word used हुआ है in this one कि the feeling of unease and instability in the viewers. अब have you seen that the torture room scene of when the Batman came? याद आ रहा है सबको? जो टॉर्चर रूम वाला सीन चल रहा होता है. Have you seen that, Sean? किसी को याद है? Many shot they have shooted is tilted. Tilted didn't mean कि camera on the same axis, you are just tilting up or tilting down camera. Tilt means tilt का technical meaning is your camera is not stable at the one axis on the same axis, right? So कहीं ना कहीं somehow it will be unbalanced a bit. It will not balanced.
So I'm not talking about the Dutch tilt angle basically. मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. Dutch tilt is totally your camera will be unstable, right? But in tilting का मतलब ये होता है it will unbalance somehow, right? So there's a feel of unease will be there. So याद आ रहा है scene किसी को कि many scene is not balanced. The many shot, not the scene. The many shot was in that the torture room was not balanced. If you guys, any one of you remember those things. Torture room वाला scene देखा है ना? Yes, sir. Yeah. इन्वेस्टिगेशन टाइप के जितने भी सीन्स होते हैं उसमें अधिकतर ऐसा ही कुछ होता है. या चलिए. फिर दूसरा क्या है? Symbolism, what it means. You use symbolism represent. वैसे normally when there's a tilting of the camera, what you feel? Is it only for the revealing the character, or when the revealing the character from the tilting up, what you feel? क्या लगता है? Is it looking that the person is dominating the frame? At that person, at the psychology of that person or that scene? किसी एक character को मान लो, suppose for an example, it will be character को you're just tilting up the camera. What is showing? क्या दिखाता है? The dominance of that character. So basically हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है ना कि if there's something that's a tilting up दिखाओ किसी को lower angle से, right? That will be the dominating character, right? Okay, now for the fourth one क्या है आपका? Dynamic energy. So this out can inject the sensor. Have you ever seen any action sequences shooted on very composed frame? Very composed frame. Have you ever seen? होगा बहुत सारे फिल्मों में होगा. But to create a tension, क्या होता है आपका कैमरा एंगल और ये चीजें क्या होती है? Is it balanced? एक ही होता है सर. Yeah. It's a psychologically it's imbalanced because something the fight is going on, fight sequence is going on, it's totally unbalanced, right? वो बहुत ही आपको सपोज फॉर एन एग्जांपल कोई ऐसा काइंड ऑफ तुम्हें मेंटल इनस्टेबिलिटी दिखाना है तुम्हें कि सपोज करो फॉर एन एग्जांपल देयर इज अर्थक्वेक. डू यू फील कि इफ यू हैव टू शूट इट लाइक देयर इज अर्थक्वेक, your camera will be fixed, your camera will be straight, or either is it tilted? No, no, it will be a handheld. Will be tilted to create that kind of tension, right? कभी स्टैटिक कैमरा स्ट्रेट फ्रेम इसमें टेंशन बिल्ड होगा ज्यादा, और अदर द कैमरा इज बिट टिल्टेड. इफ योर फ्रेम इज टोटली स्ट्रेट, बिल्कुल ट्राइपॉड बस सब पे लगा के रखा हुआ है, एंड देयर इज अर्थक्वेक, यू वांटेड टू शूट कि कुछ ऐसा सीन क्रिएट करना है मुझे, डू यू फील कि वो ज्यादा टेंशन क्रिएट करेगा, अदर योर टिल्टेड एंगल? Tilted angle for it. टिल्टेड एंगल, राइट? चलिए. चलिए उसके बाद क्या है? these are also the function. जूम भी फंक्शन ही एक तरीके से. why? The reason is मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था what is movement is it will change your frame. So when you are zoom in, what happen? You are changing the focal length and also you are changing angle of view. At the same point of time you are changing a frame. Frame change हो रहा है when you zoom in or zoom out, right?
क्या लिखा हुआ है लास्ट में से? जूम लेंस हैव अ वेरिएबल फोकल लेंथ मीनिंग दे कैन बी एडजस्टेड to provide a range of perspective, right? From wide to tele जाएगा तो there's a different kind of perspective will be there जहां तक आप जूम करते हैं. That's the function of zoom. Function of zoom का क्या हो सकता है? Simple one liner meaning it will change your perspective, right? Or either that word is correct that the provider is range of perspective basically. That's the function of zoom. पढ़ लीजिए एक बार. ओके पहला क्या कह रहा है कि इंटेंसिफाइंग इमोशंस. सो व्हेन देयर इज अ जूम इन व्हाट हैपन, क्या होता है? एज एन ऑडियंस व्हाट यू फील when there is a zoom in, angle of view is become narrower, right? Not light. अभी मैं सिर्फ zoom in की बात कर रहा हूँ. Maybe you guys can ask कि नहीं zoom in तो होगा at that point of time. There's a uh, zoom in भी करते हैं. That's called the jolly effect, right? Your camera will be on dolly and you are zoom in. Your camera will be truck dolly out, right? मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. That have the certain different aspect, right? मैं अभी normally your camera will be on one tripod and now normally you are zoom in, right? मैं jolly in की बात नहीं कर रहा हूँ. I'm zoom in की बात कर रहा हूँ normally, right? Jolly in have the different impact. So क्या होगा when you are zoom in? What happened? Your angle of view is become narrower, right? So what happened with your center of interest? You are just focusing on certain point as an audience. So कैमरा क्या कर रहा है? कैमरा ऑडियंस की तरह ही दिखा रहा है सर्टेन पॉइंट पे जाके जहां वो रुकेगा. सो क्या होगा? एज एन viewers your attention will be on that particular point, not on the whole scene. जहां जाके रुकेगा ना, as an audience your eyes will be on that point. तो क्या होगा कि उस पर्टिकुलर इमोशंस को दिखाने के लिए वॉट एवर हैपन विद दैट कैरेक्टर्स को दिखाने के लिए यू कैन यूज दैट द जूम इन. अनदर इज द आइसोलेट and focus the characters. When you are zoom in, what happen? Zoom in करते क्या हो जाता है? You are changing the focal length. So once you change the focal length, the one technical things that affected is क्या होता है? The technical aspect जो change होता है in terms apart from ये आपका एंगल ऑफ व्यू क्या चेंज होता है? तो कंपोजिशन. कंपोजिशन हो गया. कंपोजिशन चेंज हो गया. द टेक्निकल थिंग्स व्हाट चेंज? दैट्स अ डेप्थ ऑफ फील्ड, Depth राइट? of field, sir. डेप्थ ऑफ फील्ड, राइट? सो डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होगा? कम हो जाएगा. सो व्हाट हैपन? इज इट फील ऑफ आइसोलेशन और दैट कैरेक्टर विल बी मोर फोकस्ड और नॉट? सराउंडिंग्स गेटिंग आइसोलेटेड, पूरा कैरेक्टर हो जाएगा ना, एवरीथिंग विल बी नॉट ऑफ फोकस. होता है ना, सपोज करो यू आर ऑन वाइड एंगल लेंसेज, सर्टेन काइंड ऑफ लेंसेज. और मैं ये नहीं कर रहा हूँ पूरा हो जाएगा. इट्स टोटली डिपेंड अपॉन विच काइंड ऑफ लेंस यू आर यूजिंग, व्हाट फोकल लेंथ यू आर यूजिंग, व्हाट्स द एफ नंबर्स. बट द नॉर्मली if there will be zoom there will be certain focal length, right? ऐसा नहीं है कि छोटा सा जूम करके छोड़ देंगे, है ना? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शॉर्ट जूम. नॉर्मली अगर जूम होगा तो व्हाट यू फील, ऐसे जूम में क्या होता है? दैट कैरेक्टर विल बी सिग्निफाइड, नो, कि उस कैरेक्टर पे पर्टिकुलरली ज्यादा फोकस होता है. और बाकी सारी चीजें क्या होती है? एवरीथिंग विल बी आउट ऑफ focus most of the time if you are zooming like that. So that's the impact of zoom. We'll talk on jolly into जो jolly shots होते हैं. Zooming out, read it once, yes. Providing context, it means very simple कि आप जैसे zoom out करोगे, what happen? Your angle up same is just the opposite of that zoom in. क्या होगा? Will get more angle of view, larger angle of view. So क्या होगा? Whatever context is there, like establishing the location and whatever with the surrounded with the characters, everything will be visible जब आप zoom out करते हो तो. The another impact of zoom out is
सर कोई when भी there क्लोजिंग शॉट होता है जैसे एंड शॉट होता है, when there will be zoom out, it's the kind of sense of detachment कि आपसे कुछ छूट रहा है, होता है या नहीं होता है? The kind of detachment or not? होता है सर, होता है। Yeah. The reason is कि अब बड़ा सिंपल है, आप कहीं खड़े हो और आपसे कोई चीजें दूर जा रही हैं. What is happening? You are sit there, आप वहीं पर हो, as in camera person, कैमरा वहीं पर है, and now optically वो आपसे दूर जा रहा है, right? क्या हो रहा है? Size is become smaller, 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 right? और जब zoom out होगा तो what happened? You are coming towards the wide angle, right? And not the wide angle. चलो wide angle ना, जो भी lens, whatever lens you are using. So whatever the first shot, when you are taking your first shot, zoom out तो करोगे, so you are using certain focal length. When you are zooming out at the end, what happened? Is that part, is that focal length is shorter or not? Suppose karo you are shooting with a 7200, right? Or 24105. So your shot will be on 105. And from where you are just shifting it 24 mm. So 105 is your telephoto, right? A 24 is wide angle lenses. So again, it will create that sense of separation. When you comes to 24 mm, what happened? Whatever the foreground is coming towards the lens, whatever in the background, वो और पीछे चला जाएगा, right? It's create more separation. So that's create the sense of detachment. And not only for the this things only, sir, physically, there's a many things, right? कि जरूरी zoom out का मतलब only for the detachment. There's a many aspect of it, but whatever over here, I just write down. चलिए चलते हैं. The dolly shot involves moving the entire camera mounted on a wheeled platform called a dolly along a track or any smooth surface. Right. So दोनों शॉट हो सकते हैं. फंक्शन क्या है इसका? डॉली शॉट्स आर यूज्ड टू क्रिएट a smooth and controlled movement. They can follow character, reveal new information, or emphasize the relationship between elements in the scene. So in dolly shot, it could be the dolly in or dolly out. So either your camera will go towards the character or away from the character, right? So both will be there. So when your camera will be towards the character, going towards the character, it's called dolly in. When it will coming away from the character, that's called the dolly out. Now, there was a difference between dolly in and zoom in is? Anyone have idea? What's the difference between? दोनों में तो वही हो रहा है. What will be the difference? The focal length will remain same in dolly shots. Yeah. So what's the impact of it? सर उसमें कैमरा मूवमेंट होता है, लाइक फिजिकली कैमरा मूवमेंट होता है, नॉट चेंजिंग द फोकल लेंथ. Yeah, that's okay. That's I just discussed. But what's the impact of it? What's the differences that you feel in visually? And technically, छोड़ दो. What's the visually you feel? Have you seen many shot that is dolly in? You guys have seen many shot that is zoom in. What's the difference that you feel? जूम में फ्रेम कंप्रेस होता है, डॉली में फ्रेम कंप्रेस नहीं होता. The Frame subject compression and the नहीं होता. background. Other things, your angle of view is remain same. So once there is zoom in, it's look like कि तुम कैरेक्टर के पास नहीं गए, वहीं से कहीं zoom in हो गया, right? So that's not look too much real. Because and viewers, you have certain angle of view, right? And you start watching. So in dolly in, it's feel like as an audience, camera look too subjective when there is a dolly in. So it's look like angle of view is remain same and you are getting closer to the character. So what happened? Two things is over there. Whatever the relation of that character with the background, that will remain same. Relation means, I mean, the distance, right? But when you are zoom in, what happened? That distance will compressed. The distance compress होता है ना? Dolly in में क्या distance compress होता है? Have you seen that? कि dolly in होगा तो distance will compressed. No, not at all. Only depth of field will be affected, right?
because your closing focusing distance will change. So on depth of field, there is an impact, but not on the background, not even on the angle of view. क्या कह रहे हैं? Tracking shots. Tracking shots involve moving the camera alongside the action using a tracking device or rig. Unlike a dolly shot, tracking shot can be achieved without a physical track using a stabilizer or other equipments. No, Gautam have asked this question, like if there is a panning or with the gimbal or not. So when there's a tracking shots, dolly में क्या होगा? You need physical dolly, right? For that region, dolly in you need physical track. Without track, are you able to dolly in? नहीं होगा. When there's a technical word is dolly in, it means your camera must be on certain track and you have to make it, you have to move it, right? When there's a tracking shot means what? You're just tracking the character. It means following the character. That's the track. Don't get it confused. The tracking is different shot. This is the tracking. There's a tracking. Tracking is different kind of shots. So here we are talking about the tracking shots. So in tracking shots, what happened? They're just following the character. So track किस पे कर सकते हो आप? Any kind of equipments handle कर सकते हैं? Yes, sir. हैंडल कर सकते हैं हम. स्टेबलाइजर से कर सकते, वी कैन यूज गिम्बल और एनीथिंग, राइट? फंक्शन क्या है इसके? न्यू इंफॉर्मेशन हो सकता है ट्रैकिंग शॉट से, है ना? और किसी एक कैरेक्टर के साथ आप इन्वॉल्व हो, उसके व्हाट एवर हैपनिंग, जो भी चल रहा है, जो भी दिखाना चाह रहे हो उस कैरेक्टर के साथ आप. The या long shots are achieved to many long take shots. थ्रू द ट्रैकिंग. Yeah. But the tracking have the that kind of long shots, establishment shot. When there's a tracking, no, they are using certain equipments to achieve it, right? It's not always, it's not necessary that there is a dolly or there is a crane or that kind of shots. Maybe there is a Jimmy Jeep. On Jeep they can achieve it. Maybe sometimes there is a क्या कहते हैं यार वो, mm-hmm, what it call यार, uh, mm-hmm, just forget the name यार. अरे एरियल वीडियोग्राफी जो होता है, वो ड्रोन, राइट? ड्रोन से भी ट्रैकिंग करते हैं ना. Yes, sir. So your equipment will be changed. So it's not necessary like the dolly की वही होगा, है ना? Sir, that you said that Jimmy Jeep, is that grain and Jimmy Jeep It's are a smaller crane. same? That is yeah, it's the Jimmy Jeep. A Jimmy Jeep is a Okay. crane, but it's like not the smaller. You can't say अब उतना small भी नहीं रहा. Now the Jimmy Jeep in 30 feet two. So Jimmy Jeep is the kind of crane, but it's not manual. It's operated on motor, by motor. So This didn't need to Jimmy physically Jeep. Jimmy Jeep. So you didn't need to tilt your camera or tilt up your camera or tilt down your camera or arc your camera manually, because on manual crane you need to do it, right? Manually. So the crane means the person should be Yeah, the person sit. will be there. On crane, the person will be there and person will operate that thing. So maybe the crane will be on track. So at the same point of time in aerial videography and whatever you can do, same times you can track and you can, the pan your camera or tilt up your camera at the same point of time. So crane word is for the manual movement, right? Or for Jimmy Jeep is totally electronics. So there is a motor, there is a person who will operate those things. So through the motors they are just doing that. This is very simple. समझ लो. Does the have you play the game, the joystick?
ये प्ले स्टेशन में खेला है ना. So there's a, for the tilting, for the panning, there's a joystick and the camera person, the operator is doing those things. So you didn't need to do it manually. It's very simple. Let me explain it, Jimmy Jip. On crane, there is a what it called? Yeah, gimbal. On crane, there is a gimbal. Or gimbal, you can operate gimbal through joystick. You are operating your gimbal through joystick, right? Joystick से भी operate करते हो ना? Yes, sir. Yeah, it's just like that. You just think Jimmy chip is on crane, top of the crane, there will be your gimbal. And that gimbal is operated by the person who is sitting over there. So there's a wide one connection, like the BNC wire is over there, through which they are just connecting the camera, connecting the whatever the monitors and the wire, and that gimbal you can say. जो head होता है, that the kind of gimbal also. That's the Jimmy chip. Okay, one more thing. When you heard the word the tracking shots, right? It means there will be someone, right? और ट्रैकिंग को हम ऐसे भी वो कर सकते हैं क्या, फॉलोइंग शॉट्स होता है ना, ट्रैक कर रहे हो किसी को, फॉलोइंग शॉट्स होते हैं ना. इज इट सेम और नॉट? बताओ, ट्रैकिंग और फॉलोइंग इज सेम और डिफरेंट? नो सर, ट्रैकिंग में सब्जेक्ट का होना जरूरी है. जरूरी है, राइट? When we are using tracking, chalo, when we are using the following shots, right? It means what? Your camera will, right? एक सेकंड यार. हाँ बोलो. क्यों? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Whatever the movement till अभी तक जो भी movement हमने देखा ना, dolly in and whatever the shot is, right? In everywhere, your camera have a certain movement or a speed, right? Your camera, whatever the gadget that you are using, either the dolly and anything else, that have the certain speed. But when you are tracking shots or you are using a following shots, you must have to follow the speed of your character. You must have to follow whatever the speed of your character. So it's look like that. When you are changing someone, you are following someone, what happened? You are just maintaining the same distance, right? कि उसको पता ना चले. यही होता है ना? When you are following someone, you want to know that that person should not know that you are changing him and you are following him, right? So what you did, you are just maintaining the same speed. So when there is a tracking shots or following shots, basically is the following shots, your distance means your speed will remain same. आपका स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट होगा ऑलवेज. सपोज अभी मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि व्हेन यू मेक योर फ्रेम, suppose for an example, according to rule of third, you place your character over there from the starting to the landing means the end shot, your character must be there. अगर कभी वो बीच में आ जाता है और either the corner पे आ जाता है, it means either your camera movement is faster or either your camera movement is slower. So when there is a following shots, always from the starting to end, they should be there when there is a following shots. दोनों फिल्म में अगर देखिए तो आई थिंक तुम्हें ट्रैकिंग और डॉली में डिफरेंस आ जाएगा. साइनिंग तो आई थिंक सबने देखी होगी यार. Yes, sir. आई थिंक अब समझ में डिफरेंस आ गया. जिसने नहीं देखी है, you guys can take a screenshot of it and watch this films. अगर हो सकता है मेरे समझाने समझ में नहीं आया तो you can watch this films. यहाँ इजली आ जाएगा.
Yeah, no, sir. Yeah. In a dolly shot, the camera will move front and behind of the character. No, sir. If it's Yeah. move side means it's truck. Tracking. No, if no, no, the tracking is your camera will No, no, go no. I am along with the asking. character. Not truck. Truck. You have mentioned that. Tracking is sideways. In tracking, no, what happened? Yeah, that's a profile Sideway. shot. Through the sideway you are tracking. That's the tracking. Okay. Look, in tracking, maybe sometimes in tracking, what happened? Maybe sometimes your focus distance will change. Maybe because director wanted कि वो थोड़ा आगे निकल गया. You have to shoot that things. कि his speed is that character speed is faster than whatever is for whoever is following. So maybe in tracking shots, your focusing distance will change. But in tracking shot, that distance will remain same till end. That's the tracking. The sideways shot, no, the distance will remain same. That's the tracking shot. Okay. Now I think last one is the Ukraine. You know why we are taking the crane shot? और function क्या है इसके? High angle shots होते हैं, overhead shots होते हैं. दूसरे पे चलते हैं. ये पढ़ लेना है सब. Again, this one is Steadicam kind of. पढ़ लीजिए सर. Then I discuss. So these are the grips, no, sir. These are the grips here. So, but your camera will function differently, no? On a Steadicam, your camera will function differently on your, uh, like you, suppose you can say, this is the crane or gimbal or this one, no? This grip is on a Steadicam, it's totally different. When you use, look, I'm talking about the operations, right? So through the handheld also you can take same shots, right? Same framing, same things. That's what I'm in the starting, I'm explaining it. Or like a dolly in that what I am asking, like the dolly in or that kind of panning. To handheld you can do it, right? The same Yeah, things you can do with the Steadicam. Is there difference or not? it will well stabilized. It's very stabilized. At same point of time, it's look very real, right? The reason is difference in terms of key handheld or this one is very established because they are using two things, right? Key they need to balance it. So they use certain motors. So there is difference between वो ये जो हम use करते हैं gimbal and क्या है whatever the Steadicam is. क्या differences होते हैं दोनों में? तो स्टेडी कैम और स्टैटिक शॉट सेम होता है क्या? नहीं नहीं नहीं. A static is when there is a no movement. That's the static shot. No? Sir, now you have mentioned that in a handheld also we can uh, do the whatever shots that we have mentioned before. Yeah, we can take whatever shot, but the function is different. No? The operation is different. The medium is different. We can take. I told Yeah. you, but at that time, no, कि हम on the crane we can also took same shot. On crane, we can take panning shots. Yeah, but that's a pan also. Handheld also we can pan also. Yeah.
क्या पूछ That रहे one, क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कैमरा मूवमेंट, कितने फंक्शंस हैं हमारे पास? yeah, that only I asked because या in tilt and pan that have mentioned that the camera should be in a fixed position. So while coming to handheld pan, that only I asked. Fixed means what they are meaning, the tripod, anything like that. camera will fixed means when camera will in tripod basically. The what happened when you are taking handheld shot, right? Or you are tilting up or tilting down, right? Okay. You are not machine, so you can't fix it properly as in tripod. So there will be a bit moment. There will be a bit moment in terms of vertical axis. If you are using handheld camera, you try to move it on horizontally, there will be a movement on vertical axis still. But once your camera is on tripod, you lock the vertical axis, your camera can only move horizontally. Right? Those are things. क्रेन हो गया था ना? Okay. So the another point is operator mobility. It means your camera, as a person, you can go anywhere in any direction. But whatever equipment till now we are using, like the dolly and crane and whatever that we are using, there's a certain limitation in mobility, right? If your camera is on crane, बहुत lower axis पे नहीं आ सकती. You can't shoot in a very lower axis, right? But then as an operator at the same point of time when we are spanning, वो tilt भी कर सकता है, right? Because there's a physical movement of it. But once your camera is on crane, once your camera is dolly, right, there will be a certain movement. When you are shooting with like on dolly, can you make arc shot? Is it possible to shoot arc shot? Arc, you know, arc समझते हो ना? No ideas. Arc shot is how can I explain here? 1 second. Let me know. One second. तो वो 180 डिग्री घूम जाता है कैमरा। No, no, no. On horizontal axis, right, from the one side, right, तुम्हारा कैमरा जो अपने वर्टिकल एक्सिस पे अप होता है, राइट, काइंड ऑफ हैव यू सीन द टिल्ट शिफ्ट एंगल, डच टिल्ट एंगल, हैव यू नो दैट? Yeah, that's good. Dutch tilt angle, how your camera fixed? Slightly tapered. That way, right? So that Yeah. moment called arc, that kind of moment called arc shot. The half rotation shot. Yeah, half rotation, yeah, right, half rotation, that's called the arc shot. That's the arc. 1 second, yeah, क्या हुआ? PPT कहाँ चली गई? 1 second. एक second. So yeah, that's what I'm saying. So is it possible when your camera is on tripod, when your camera is on a dolly to make arc shot? But once your camera is in your hand, once your camera is a steady cam, you can make it or not? Once your camera is on gimbal, you can make it or not? Are you able to shoot it or not? When there is a steady cam or Yeah. gimbal or handle, you can make Yeah, that yeah. shot, but not on tripod. Possible? Not possible. Yeah. So every equipments have the certain limitations.
Or maybe that's why maybe already this question have came. So why I'm discussing it. So maybe there will be the question, what's the difference between when you are taking shot with the steady cam and the gimbal? And what's the difference when we are shooting with steady cam and uh, dolly in or whatever the equipment it will be? Maybe because they have already asked for the equipments, like those moments, not the equipments, the moments. Just read it once. It's very simple things. कि handle camera क्या होता है? There's a dynamic mobility. Again, if your camera is in your hand, you can go anywhere, right? Versatility means कि you can quick release anything, right? You can change any settings, any kind of thing. So that's the things. कोई भी unexpected moment हुआ. Because you know why in documentary filmmaking, अगर ये कहा जाएगा for the documentary filmmaking, if you have supposed to answer like that, the difference between uh, steady cam and handheld camera, you can take an example from documentation or documentary filmmaking. There people are using handheld camera. Why they are not using like they have budgets, but why they are not shooting with the crane or shooting with the like steady cam? क्यों नहीं करता? The reason? The reason people, why people are still preferring handheld camera? क्यों करते हैं? To bring that reality To bring that reality, one thing, to bring that reality, it's look more real. The another things is It that shows simplicity, sir. क्या? Sir, simplicity. No, simplicity is short से उससे नहीं हो सकता कि it's look more realistic because it look like someone is talking to you. But it's more about when you are documenting, you are not shooting with the real actors, right? You are shooting with the real person or real character, right? So they are not actor by profession. So maybe how they started walking and how they can change the direction, you don't know, right? So once you are using a steady cam or gimbal or something else, all are the motor operated things. So what happened? कभी भी whoever आप में से जिसने भी gimbal चाहिए, it's very difficult to take abrupt move. Once things in motion, it will be in motion. If you have to pan it, so you have to wait for a second, right? Then you can arrange the frame. But for the handheld camera, is it easy or not? To change the angle, to change the things. Because they are not by profession, they are not actor, they are real people. So क्या होगा? They keep moving here, there. The speed will be different, the things will be different. So you can quickly change, quickly fix your things. So that's the reason in documentary filmmaking people are using those things. तीसरा, if मैं ये अगर क्वेश्चन आ जाएगा ऐसा तो क्या आंसर दे सकते हो? Because you're for the documentary filmmaking, you don't have that much of budget, right? You can't afford that much of crew. So handheld camera, you have to go very interior areas and that kind of things जहाँ electricity नहीं होती, ऐसा नहीं होता, right? So you can't take much more of your gadgets over there, the like tripod and everything. So that's the reason still people are preferring video camera instead of any cinema cameras or for that kind of things for documentary filmmaking and the handheld style shooting because it's क्या होता है उनके पास चीजें कम होती हैं, right? So that's the one thing. There will be many things that you can write down. Rack focus, ये पता है सबको what is rack focus is? Shifting the focus within a scene, right? From one character to another character. The shifting the focus. What's the effect of these things? Why they are taking these things? क्या impact पड़ता है? It means to shifting your center. Once you are shifting your focus, it means what? You are attention. shifting your point. You are pointing that attention towards a specific character within the scene, right? Or you are just wanted to change the point of view, right? That's why you are shifting the focus. That's called the rack focus. Within a scene, you are just shifting those things. That's called the rack focus. इसमें क्वेश्चन आ चुका है, आई थिंक सेलेक्टिव फोकस जिसको कहते थे.
पढ़ लीजिए। और अगर समझ में नहीं है तो एक रैक फोकस का मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो एक बार पढ़ लेते हैं इफेक्ट क्या क्या होता है। रिवीलिंग इंफॉर्मेशन, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम। By shifting the focus, maybe it means when there is a rack focus, it means in your frame there is a shallow depth of field, right? If there is a great depth of field, is it possible? No, sir. There will be the shallow depth of field, right? So when you are shifting the focus, what happened? If it also you are just revealing the information, something that is new in your frame, you wanted to shift attention towards that point, right? So that's a revealing the information. डेप्थ एंड डायमेंशन ये मैं भेज दूंगा, आप लोग पढ़ लेंगे इसे। और यहाँ पर वीडियो भी है जो मैंने डाला हुआ है विद पेन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सर रैक फोकस कैमरा मोड पे आएगा? क्या रैक फोकस रैक फोकस कैमरा द मोमेंट में आएगा मोमेंट क्या? ऑफ कैमरा, या इज द मोमेंट ऑफ कैमरा बेसिकली, बिकॉज रैक फोकस भी इज अ टेक्निक्स। बिकॉज थ्रू द क्यों आएगा ये बताता हूँ, व्हाई इट्स कम्स टू दिस पॉइंट, क्यों मैंने ये रखा है। द रीजन इज you are just moving, you are not moving your frame basically, but when doing a rack focus, what happened? As an audience, is your point of view is moving or not? Is your point of view is moving or not? Is your perspective moving or not? यस सर। हो रहा है ना? So technically now aesthetically these are, because within the frame you are moving. You are just changing your perspective. और स्टार्टिंग मैंने आपको क्या कहा था कि when there is a change in your perspective, change in the frame, okay, well that's the camera movement. So rack focus also is a movement. और ये आई थिंक मुझे लगा कोई नहीं पूछेगा, बट दैट्स गुड थिंग्स यार, मैंने जानबूझ के इसलिए इसे रखा था। इट्स ऑल्सो कैमरा मूवमेंट बेसिकली। और इफ समवन आस्क यू कि रैक फोकस इज मूवमेंट और नॉट, क्लियरली से यस, द रीजन इज एस्थेटिकली, है ना। किसी भी कैमरा मूवमेंट का व्हाट्स द फंक्शन ऑफ कैमरा मूवमेंट? टू चेंज द पर्सपेक्टिव, टू गिव यू न्यू इंफॉर्मेशन, राइट। विदाउट कटिंग, मैंने ये तीन चीजें यूज करी थी, विदाउट कट। तो क्या व्हेन यू आर डूइंग द रैक फोकस इज देयर कट? नो, राइट। कट है कहीं पर जब रैक फोकस करते हैं तो, बट इज देयर चेंज इन पर्सपेक्टिव और नॉट? हो रहा है ना? यस बस हो रहा है। तो आई गॉट योर आंसर। इफ यू थिंक ऑफ इट तुम्हें आंसर मिल जाए क्लियरली इसका। विप 10 का जो सिंपल ये एग्जांपल भी है, सो यू गाइस कैन सी टू इट, इसको देख सकते हो। और आई थिंक कुछ क्वेश्चंस थे आप लोगों के प्रीवियस ईयर के जो भेजा था, जस्ट मैं ओपन कर रहा हूँ उसे, देन विल डिस्कस ऑन इट। इसमें से किसी को कुछ पूछना है? एनीवन हैव एनी डाउट, एनी काइंड ऑफ डाउट, जस्ट आस्क। है कुछ? सर ऐसा क्वेश्चन आया तो लाइक साइकोलॉजिकली भी हम बता सकते हैं ना, मतलब हर ऑब्वियसली यार, दिस आर द मूवमेंट, इज वेरी सिंपल। कोई पूछे एकदम सीना ठोक के बोलो मूवमेंट है। It's ओके सर। not only about, it's not, look, one second. It's not about the physical movement, but is there movement? जो अगर मैं कैमरा मूवमेंट को तुम कहीं पर देखोगे, anyone who explain the camera movement, what is camera movement? They use three words. यार ये चलो मैं अब कर देता हूँ। They have used three words कि कैमरा मूवमेंट का मतलब क्या है? To change the perspective, to bring a new information, right? The things, ये दोनों चीजें कैसे होंगी? Without cut, if things is happening. ये दोनों चीजें, अगर आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है
any kind of camera movement तुम अभी तक उठा लो. What the camera movement? Panning, tilting, dolly in, dolly out, right? Arc, क्या हो रहा है? The perspective is changing. The same things you are getting when you are doing rack focus or selective focus, right? These are the movement basically. एक चीज Sir, बताओ आप क्या can when you there's a yeah. can you give me a quick view on the grips and what are the movements the grip that produces? Like that tripod means pan and tail like. That PPT you want? No. Can you say what are the grips available and There's a many grips, guys. Don't get it with that one. There's a many grips for the tripod, camera. I'll send you the list of it. Good. There's a thousand of things that you through which you can achieve those things. There's a many kind of grips. Don't get why I'm explaining this question is because already I think previous year question I got that things. So I thought maybe related to the camera movement, maybe क्योंकि question आ चुका है already. So maybe not the related to maybe कि आपको uh, within different kind of camera movement के the differences that they can ask. So that's why I just मैं भेज दूंगा वो I'll send it to you or list. So कहाँ थे हम? हाँ रैक फोकस पे थे ना यार. तो कंफ्यूजन दूर हुआ तुम्हारा रैक फोकस का भी. चलिए एक सेकंड. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या लिखा आंसर? वाज द आंसर इज तुम्हें ऑप्शन दिया? इज देयर ऑप्शन और नॉट? No, sir, no option. देयर इज नो ऑप्शन. कहां पर ये क्वेश्चन पूछा था? सर ये 2017 या 16 का है. ओके चलो. Dash stops and dash stops are two ways of making aperture on a camera lens. Dash सर हम stops लोग and dash stops. The answer is F stops and T stops are two ways of making aperture on a camera lens. आपके कैमरे में F stop होता है. Cinema lenses have the T stop. So making aperture on lens or any camera lens, there's a two way. The two ways through the F stop. What is F number is? What is F number is? the diameter f number is No, not it's not the diameter. the number that the f number. It's What are just the the number? unit. It's just the number. It's related to light basically. So it's not the diameter. It's not the aperture सर diameter. रेशियो है सर. Once again, is the lighting ratio वो छोड़ते हैं. If it will be diameter, right? Suppose just think about it. If that f number will be the diameter, so on f11 it will be the f11 opening of aperture. So you should get more light, no? Why you are No, getting no, no. less light over there? No. The f number is used to find the diameter of the opening. Yeah. So there's a bigger things. उसमें थोड़ा लक्स और ये सब आ जाएगा. I think मैं जो बता नहीं पाऊंगा how f number is. So f number is just the notion through which you can calculate your opening of aperture, right? What happened here? चला गया. Sorry. Through which you can calculate your diameter opening. So f number is the things कि how much that area will open, right? यार दिख नहीं रहा है मेरा वीडियो. And T stop is T stop, right? दोनों stop ही लिखा हुआ है ना भाई. T stop stand for the true stop. No, every cinema lenses have the two stop. Sorry, that the T stop. T stop is the true stop. It means whatever the opening of your aperture, right? That is denoted by F number. And what is the intensity of that light, right? That is calculated by the T stop. That's the difference between F stop and T stop. So things is remain same. You open your area, you open your windows like 35 mm or 45 mm or 2 inch or 4 inch, whatever area you wanted to open, right?
that's the f number, and what will be the intensity of that light, that is denoted by t number. That's the difference. यार क्या हो? So is it clear, first question? Yes, sir, clear. Abhinav, क्लियर क्लियर सर. हो गया? दूसरे का आंसर क्या लिखा है तुम लोगों ने? A still picture of an सर object taken with its reflection in a mirror or on water will create what and what? रियल लिखा था और फिर मिरर इमेज लिखा था. यस सर, रियल एंड मिररिंग इमेज. Real and मिरर्ड. नहीं. सर एक चीज इन्वर्जन बताओ. नहीं होगा इसमें? रुको रुको, कन्वर्जन, रुको रुको, 1 सेकेंड. स्टिल पिक्चर ऑफ एन, इसका आंसर थोड़ा सा, एक तो इसने ये लिखा नहीं कि इज द प्लेन मिरर और विच काइंड ऑफ मिरर. द फर्स्ट थिंग्स इज दैट, राइट. दूसरा, व्हेन यू आर गेटिंग योर इमेज ऑन लेंस, राइट, जब तुम्हारे लेंस पे इमेज आता है, हाउ इट फॉर्म्ड? Conversion of light, that light is falling from somewhere, right? अरे लाइट कहीं से आ रही थी तभी दिखाई देता है ना. यस सर. यस सर. That's called the real image. यस सर. बट जब मिरर से आ रहा होता है तो इज इट रियल इमेज? सर वर्चुअल हो जाता है. वर्चुअल हो गया ना वो तो. मिरर का वो रियल इमेज कैसे हुआ? वो इज इट वर्चुअल और नॉट? सर बट इसमें इसमें ऐसा लग रहा था कि वो स्टिल पिक्चर के बारे में पूछ रहे हैं. हाँ सर, वो फोटोग्राफ जो है. of a still picture of an image taken with its reflection. क्या करें? still picture of an image. हाँ, still picture ले रहा, और of फिर an ऑब्जेक्ट. still picture of an object taken with its reflection in a mirror or on water will create still picture of an object. ये तो सर वही इसमें कह रहा है पिक्चर. वाटर भी इंक्लूड कर दिया ना सर, इसलिए हमने रियल. मिरर और दे तो दिया, और तो लगा ही दिया. मिरर पे बने या वाटर पे बने, इट विल बी वर्चुअल. ये क्वेश्चन कहाँ पर मुझे भेजना, दोनों वर्चुअल होगा. और वर्चुअल के बदले एक और लाइन यूज करते हैं यार. देयर इज अनदर वर्ड दैट दे आर यूजिंग. वर्चुअल के बदले यूज करते फॉर द वाटर. रे 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 क्या तो कहते हैं उसे यार. इट्स आई जस्ट फॉरगेट द Sir, नेम बट द. yeah, little distortion will be there, no, sir, if it's in water or. No, but they are not asking if water have the wave or not. Is plain water have wave or not? Distortion कैसे? When there is a distortion, there is a wave, no? इस सर क्वेश्चन को इसलिए क्या हम किया लोगों थोड़ा, ने मिरर को भी इंक्लूड इसीलिए किया. इट्स मेकिंग कंफ्यूजन. दोनों को या तो एक प्लेन पे रखा हुआ है, मिरर और रिफ्लेक्शन जो है, सॉरी, Sir, मिरर और flare will वाटर. be there, no, sir, flare. व्हाट? Flare. फ्लेयर? Yeah. विच काइंड ऑफ फ्लेयर? लुक, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें. फ्लेयर इज समथिंग डिफरेंट. फ्लेयर इज व्हाट? Whatever your lens is getting, na, that's the forming image, right? Any light that is coming towards the lens, right, that is forming image. The light that is not forming, non-forming image is called flare. The non-forming image. Lens flare आता है ना, whatever light that the sunlight is coming on your lens. It's not non-forming image. So in water reflection, on the water, there is a reflection. Have you seen anything that's a non-forming image? Lens flare is the things. Lens flare could just describe like that. Non-forming image. Whatever light that is coming towards your lens is forming an image. And whatever light that is not forming any image, that's called lens flare. Right? सर मिररिंग इमेज तो बनेगा ना सर. नहीं, मिररिंग, बट टेक्निकल नाम क्या इसका होगा यार? इससे ऑप्शन देना चाहिए. स्टिल ये तो इमेज तो वही बन रही है, तो वर्चुअल इमेज बनेगा. बट टेक्निकल यू कैन गिव एनी नेम. यहाँ तो जो नाम दे दो वही सही है.
वर्चुअल डाल दो, मिररिंग इमेज डाल दो, दोनों आंसर सही है। सर हम लोगों ने देखने की कोशिश करी थी तो उसमें मिररिंग ही बता रहा था, क्योंकि इन्वर्टेड तो अपसाइड डाउन होता है। इन्वर्टेड अपसाइड डाउन हुआ, बट वो मिरर की क्वालिटी क्या, अपसाइड डाउन लिखोगे वो तो मैच नहीं कर रहे हैं यहाँ से। Sir, अपसाइड डाउन तो हुआ मान लो, the दिस इज इट लाइक द reversal, अपसाइड डाउन, राइट? yeah, बट द yeah. थिंग्स इज दैट अब एक्चुअल टर्म क्या यूज करना चाह रहा है ये, व्हाट दे वांटेड टू यूज, इज इट द which kind of image that they form, or either रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बना है वो कैसे, क्या पूछ रहा है ये इमेज को, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, व्हाट दे वांटेड टू आस्क। आई थिंक अगर ऐसा होगा, बिकॉज इफ द सर्टेन पॉइंट, इफ दैट इमेज, ये जो लाइन है ना, स्टिल पिक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, if that light is converted and converges at certain point, that image become real, तो इमेज रियल होगा। बट इसने क्लियर किया ही नहीं, इट्स नॉट क्लियर इन क्वेश्चंस। किस ईयर के क्वेश्चन में है? आई सर थिंक 18th की में है। 2017 18 में, आई थिंक। भेज देना। 18 में 18 सर में 18 का है। Sir, while googling, it's coming. Sir. I'll check it out here. I don't Google it, so that's the things. While googling it, it's coming that it will be erect. It will be Virtual and erect. a Uh, virtual and erect is same word here. Yeah, it will be no, the virtual reversal and erect. Erect. Yeah, that's So the virtual that's and what erect I is same. we wrote, No, mirroring no, image. that's not right. ये क्वेश्चन में मुझे एक बार वो ईयर का वो भेज देना। I'll just check it out. एक तो आंसर वर्चुअल है, इधर वर्चुअल एंड वर्चुअल होगा, रियल एंड वर्चुअल तो नहीं होगा, तो मैं देख लूंगा। चलो थर्ड क्वेश्चन पे Okay, चलते हैं। देखते हैं वो क्वेश्चन को, देख लेता हूं मैं। A Okay. zoom lens movement during its operation will change. जो अभी बताया सर वो तो, See, अभी एक अभी तो अभी फोकल जस्ट यू गाइस लेंथ। कैन आंसर इट, अभी जस्ट वी हैव डिस्कस्ड। हाँ सर, हाँ सर। सर फोकल लेंथ तो हम लोग का सबका सेम आया है, बट अर्नव लिखा है पॉइंट ऑफ फोकस, मैंने लिखा है कंपोजिशन। सर डेप्थ ऑफ फील्ड ही होएगा ना, मतलब दूसरा उसमें आंसर क्या होएगा? डेप्थ ऑफ फील्ड या फोकस पॉइंट दोनों लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ डेप्थ ऑफ देखो फील्ड क्या लिख। क्या उसमें क्या लिखा है कि जूम लेंस मूवमेंट, अब मूवमेंट के बारे में पूछ रहा है कि थ्रू दैट मूवमेंट व्हाट हैपेंड। जूम लेंस मूवमेंट मतलब जूम लेंस मूव करेगा, राइट? सो फर्स्ट थिंग्स विल चेंज, टेक्निकली द फर्स्ट थिंग्स विल फोकल चेंज लेंथ, इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, अगेन टेक्निकली यस इट विल यस चेंज। सर। नो नो अग्निम छोड़ दो, बाकी उसको छोड़ दो ना, मैं बहुत वो वाला लेंस शॉर्ट जूम यूज कर रहा था, बहुत ज्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड में इम्पैक्ट नहीं पड़ा। They didn't mention ना, we are using 70-200, सर ठीक है, हाँ और सर। they are also not mentioning like that कि 70 से 200 तक हम चले गए हैं, right? यस सर। Then Focal there length will be and impact field on of view. depth of field. तो फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट तो सेम रहेगा यार, वेरी फोकल लिखा हुआ है क्या? कैसे फोकस पॉइंट चेंज हो सकता है? फोकस विल रिमेन सेम if they mention that your lens, we are using a very focal length. ओके सर, ओके सर। You guys are knowing that very focal and parafocal. हाँ सर, बताया था। Parafocal, very focal, you guys know that. When you यस are सर। zooming, when you are zooming, if suppose if you focus at the 10 feet and 8 feet, whatever the focus will be, right? And any zoom lens have the capacity that the parafocal and varifocal, right? So very parafocal lens have the capacity. Suppose karo in for an example, 24-105 lens that you have. On 105, you focused on 10 feet. Now for the same shot, if you are using and zooming out on 24, your focus will be changed. That's the varifocal lens. But there is a lens parafocal in which either you are on 24 or 105, the 10 feet will remain on 10 feet, right? क्या वो मेंशन किया है जो फोकस पॉइंट चेंज हो जाएगा? इज दे मेंशन दैट थिंग्स? मेंशन नहीं किया है ना तुम्हारा? नहीं सर। नहीं किया है, तो कैसे कह सकते हो वो चेंज होगा? तो टेक्निकली क्या चीजें चेंज हो सकती हैं? द आंसर इज अ जूम लेंस मूवमेंट ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन विल चेंज द फर्स्ट थिंग्स फोकल लेंथ एंड Field of view. तीसरा क्या चेंज होगा? ये एंगल ऑफ व्यू, एंगल ऑफ व्यू सर। दो ही चीजें चेंज सर होंगी ना। कंपोजिशन कंपोजिशन Composition is technical. Composition is the your things. You compose it.
ये तो कंपोजिशन, तो तुम्हारा कंपोजिशन किसका वर्ड है? कैमरा कैन कंपोज इटसेल्फ? नहीं ना, यू नीड अ पर्सन। बट जूम इन जब तुम करते हो, मूवमेंट करते हो, राइट, दैट्स अ कैमराज फंक्शन। कंपोजिशन इज नॉट कैमरा फंक्शन। यू कैन राइट दैट आंसर, कंपोजिशन चेंज हो, बट कंपोजिशन में क्या चेंज होगा? वाइट टू मिड हो गए, वाइट टू मिड हो गए, दैट्स अ कंपोजिशन। और वो मिड क्यों हुआ? मिड का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन ऑफ इट? क्योंकि एंगल ऑफ व्यू हो गए थे। बिकॉज ऑफ एंगल ऑफ व्यू कंप्रेस, दैट्स व्हाई इट्स बिकम ना। तुमने ओके सर। कैमरा मूवमेंट में कुछ चेंज नहीं किया ना। तुम यस सर। कैमरा आगे लेके गए, पीछे लेके गए, क्या किया तुमने? Why you are getting that, suppose from wide to, you zoom in from wide and now you are making it closer, right? Why it's happened? The base of it is, क्यों ऐसा हो गया? Because angle of view getting compressed, तभी होगा ना। Sir, angle of view or field of view? No, no, not get it. Angle of view, field of view. Angle of view, just use the word angle of view. Angle of view, how much your lens is capturing. Suppose करो, how much area you are seeing when you are as a human beings, कितना area दिखाई देता है? Sir, both are same only, sir. Angle and Yeah. So So, field of but view we is more use regarding angle of view center. because there is certain angle. Field of view will change, and there is certain, because in your angle things is changing. So the answer is the zoom lens movement during the operation will change. क्या हो जाएगा? Focal length and whatever angle of view, field of view, जो भी लिखना हो. But अगर तुम composition लिखोगे आगे ना, क्या इधर? सर पर्सपेक्टिव, सर पर्सपेक्टिव लिख सकते हैं क्या इसमें? देखो, बात तो दोनों से वही हो रहा है ना, पर्सपेक्टिव कैसे चेंज होगा? जूम इन करने से पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, राइट? बट उस पर्सपेक्टिव चेंज होने का रीजन क्या है? टेक्निकल रीजन क्या है यार? सर एंगल ऑफ व्यू का चेंज होना। टेक्निकल क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन टेक्निकल है, एस्थेटिक्स नहीं है। ओके। Aesthetically होता तो you can answer it. Maybe if there is a four answer, or in that answer if there is a no angle of view, there is a no field of view, so you can write perspective, you can write anything. और suppose अब मैं example दे दूं कि the person is sitting on the chair and you are using zoom lens, which kind of perspective it will change? Mid to close में कितना perspective change होगा? Only short size have been changed, or perspective have been changed? Short size change होगा ना सिर्फ, सही है सर, right? शॉर्ट साइज है। तो ये आंसर गलत सही हो जाएगा तुम्हारा। एक सर्टेन पॉइंट पे सही होगा, बट फॉर एवरीवेयर इफ एनीवन आस्क लाइक दैट, कि कहीं से भी, दैट द फील्ड ऑफ व्यू इज द राइट आंसर, कि भाई तुम मिड बना, क्लोज बना, वट एवर इट इज, राइट? बट क्या है, वो कंप्रेस होगा तभी तुम्हें फ्रेम मिलेगा। तो यार जस्ट बेस बता दिया आपने, ठीक है? सर फील्ड ऑफ व्यू तो थोड़ा सेंसर से रिलेटेड है। बट एंगल ऑफ व्यू यूज करो, फील्ड ऑफ व्यू दोनों यूज कर लेते हैं, उससे कोई वो नहीं है। एंगल ऑफ व्यू यूज करो। ओके सर। क्वेश्चन है, ए मूवी क्या फिजिकल मूवमेंट विल चेंज दैट्स अलोंग विथ, क्या आंसर होगा? बताओ तुम ही लोग दो, आंसर क्या होना चाहिए? sir, composition and right. The movie camera physical movement will change. सर तो इसमें पर्सपेक्टिव लगा था मेरे को। इसमें पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव आ सकता है, ऑब्वियसली विल चेंज।
क्या होगा बताओ? दूसरा क्या होगा? सर एक तो कॉम्पोजिशन भी लगा था, फ्रेमिंग भी लगा था, और वो पर्सपेक्टिव भी लगा था। विल चेंज द कंपोजिशन एंड पर्सपेक्टिव, दोनों हो सकता है। ओके सर। विल चेंज कंपोजिशन एंड पर्सपेक्टिव, कहीं से कोई आंसर गलत नहीं होगा। ओके It will सर। be the composition now. Now because there is a physical movement of your camera. आप कह रहे कैमरा लेके जा रहे हो now. So now what it will be changed? तो सर कॉम्पोजिशन। बट पर्सपेक्टिव तो कंपोजिशन में आएगा ना। हम्म बट पर्सपेक्टिव तुम्हारा चेंज हो सकता है ना। चेंज कह रहे चेंज क्या हो सकता है? तो आपका कंपोजिशन, कंपोजिशन नहीं फ्रेमिंग कह सकते हो। इसके आंसर देखने पड़े। कंपोजिशन एंड दोनों चीजें बात बराबर, क्या चेंज करेगा ये? तो पर्सपेक्टिव तो करेगा ही। पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो गया। क्या है मूवी कैमरा फिजिकल मोमेंट चेंज। देखो, तो इसलिए फ्रेमिंग रुको लगा। रुको रुको, नहीं 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 नहीं, दो चीजें चेंज करेगा ये। ओके। गड़बड़ गड़बड़ आंसर कह रहा था मेरे को, मैं पूछ पढ़ा नहीं था। ठीक है, मूवी कैमरा फिजिकल मूवमेंट विल चेंज। पर्सपेक्टिव लिख दो, ठीक कह रहा था, तो पर्सपेक्टिव लिख दो अलोंग विद डेप्थ ऑफ फील्ड। भाई वंस यू मूव द कैमरा, फोकस पॉइंट तो चलेगा ना उसका। डेप्थ ऑफ फील्ड चेंज होगा या नहीं होगा? यस सर, यस सर। Suppose you are focusing on 10 feet, you have started moving your camera either towards the 10 feet or the far away from the character. चेंज होगा या नहीं होगा? सर बट जैसे रोमा वाला शॉट था, उसमें तो सर हाँ, कैमरा मूवमेंट भी है, लेफ्ट टू राइट, और वो सर उसको भी ट्रैक कर रहा है। इसको सर जो हमारा कैरेक्टर है वो भी मूव करता हुआ जाता है लेफ्ट टू राइट। does the trucking physical हाँ movement will change हाँ, but depth of field होगा यार, सर because अगर the किसी movie एक पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो भी दूसरा कहाँ पे चेंज होगा डेप्थ ऑफ फील्ड? क्या? सर अगर किसी एक पॉइंट के अराउंड मान लीजिए कोई पर्सन खड़ा है, उसके अराउंड बट देयर इज रिवॉल्व क्या करेगा। कह रहा है मूवी कैमरा फिजिकल मूवमेंट कह रहा है बेटा। कैमरा लेके भाग रहे हो, कैमरा फिजिकल समझो, डॉली इन हो रहा है, डॉली आउट हो रहा है, फिजिकल मूवमेंट है। अभी मैंने स्टार्टिंग वही बता, दैट्स व्हाट आई एम डिस्कसिंग ओवर हियर। There's a physical movement of camera. It means your camera will not at the same point. रोमा का जो शॉट देख रहे थे वहीं से ट्रैक कर रहा था, पैन कर रहा था. Is there camera movement? Tilt up, tilt down is camera movement, but not physical camera movement. तब बट रोमा में से साइड ट्रैकिंग का भी शॉट्स जो था, जो एकदम द कैरेक्टर सेंटर्ड में रह के साइड ट्रैकिंग कर रहा था, तो उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड से चेंज तो नहीं हो रही थी। जो मार्केट प्लेस में डेप्थ ऑफ पूरा साइड ट्रैकिंग शॉट था उसका, उतना लॉन्ग वाला। No, sir, that is truck shot. That ट्रकिंग शॉट अभी मैंने कहा था, ट्रकिंग शॉट में मैंने बता दिया था अभी कि द डिस्टेंस विल रिमेन सेम। ट्रकिंग साइड शॉट है, साइड से ट्रक कर, तुम्हें साइड से लगाते जाओ, तुम चलते जाओ, तो फोकस विल रिमेन सेम। फोकस सेम रहेगा ना भाई ट्रकिंग में, ट्रैकिंग में भी सेम रहेगा। बट अगर तुम नॉर्मली इफ यू चेंज योर कैमरा, सर फिजिकल मूवमेंट चेंज करते हो कैमरे का, मूवी कैमरा फिजिकल मूवमेंट, अगर सपोज करो फॉर इन शॉट, नॉट फॉर द शॉट ओनली, बिफोर, नॉट फॉर द कंपोजिशन, जस्ट थिंक अबाउट इट। यू आर टेकिंग योर कैमरा ओवर हियर, अपने कैमरा को उठा के आगे लेके चले गए तुम। नो, जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट विल बी चेंज्ड? क्या क्या चेंज हुआ? व्हाट हैव बीन चेंज्ड? पहला पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, यस सर हो गया। पहला पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, राइट। तो अब दूसरा क्या चेंज हुआ होगा? बिकॉज प्रीवियसली योर फोकस वाज ऑन 8 फीट, नाउ व्हाट हैपेंड? तो वो चेंज हो जाएगा 8 फीट से। चेंज हुआ ना भाई, फिजिकल मूवमेंट है ना कैमरे का। एक जगह से दूसरे जगह गया ना, फिजिकली मूव हुआ ना कैमरा। एक ये नहीं करे शॉट को तुम ट्रैक कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अगर फिजिकल मूवमेंट है इसका मतलब कैमरा एक जगह से दूसरे जगह गया है। तो अगर दूसरे जगह जाएगा, इफ यू चेंज योर मूवमेंट ऑफ फिजिकल मूवमेंट फ्रॉम हियर टू देयर, व्हाट हैपन? दो चीजें तो चेंज होंगी। पहला तो पर्सपेक्टिव, द अनदर इज, बिकॉज अगर वो तुम कह सकते हो कि इन टर्म्स ऑफ फ्रेम और पर्सपेक्टिव दोनों कह सकते हो,
बट ये भी है कि पर्सपेक्टिव तो कंपोजिशन में ही आता है। तुम फ्रेम कह दो, फ्रेम भी तो कंपोजिशन है, होगा ना? हाँ सर। तो ये भी हो सकता है, विल चेंज द फ्रेम एंड पर्सपेक्टिव, बिकॉज फ्रेम तो चेंज होगा, हाँ सर, फ्रेम चेंज हो गया। तो पर्सपेक्टिव भी चेंज होगा, बट दोनों तो एक ही लाइन में आ रहा है। अगर ऐसे कुछ आंसर है, दोनों हो सकता है। ओके सर। सर मेजरली तो डेप्थ ऑफ फील्ड होगा चाहिए। बिकॉज देखो यहाँ ने एक वर्ड दे दिया, कैमरा मूवमेंट नहीं लिखा, समझो चीजों को, कि अ मूवी कैमरा मूवमेंट विल चेंज। अगर सिर्फ मूवमेंट होता ना, इसका मतलब क्वेश्चन बनाने वाले ने दिमाग लगाया है, उससे वर्ड डाल दिया फिजिकल कैमरा मूवमेंट, यूज द वर्ड फिजिकल कैमरा मूवमेंट। तो वंस यू फिजिकली, अच्छा बड़ा सिंपल सा, मैं अब आई वाज एक्सप्लेनिंग फॉर द डेप्थ ऑफ फील्ड, हाउ सेंसर अफेक्ट डेप्थ ऑफ फील्ड, राइट? इन विच व्हेन वी आर टेकिंग एग्जांपल, राइट, कि हाउ इट अफेक्ट इनडायरेक्टली, उसमें क्या करते थे? फिजिकली यू हैव टू मूव योर कैमरा, राइट, टू गेट सेम एंगल ऑफ व्यू, यही करते थे, यही वर्ड यूज करते थे ना, to get the same angle of view as on like full frame sensor, and you have another sensor that is crop sensor, and both camera have the 50 mm. To get same angle of view, what you need to do? फिजिकली ही मूव कर रहे थे ना। इसका मतलब कैमरा का जो पहला पोजीशन था, द फर्स्ट पोजीशन फिजिकल मूवमेंट में, तो अनदर पोजीशन। सो इन विच इसमें क्या चेंज हो सकता है? फर्स्ट पर्सपेक्टिव, अनदर डेप्थ ऑफ फील्ड, मेजरली यही होगा, बट मे बी you can write perspective, frame perspective, anything that you can write. ठीक है, another one, ये क्या है? इसका आंसर क्या है भाई? Light travel in straight direction, it straight will, line, straight line, straight line, and it will get refracted bent. while entering the different medium, यही तो होगा। यस, यस सर। सर Sir, वो एक्चुअली में रिफ्रैक्टेड की जगह ब्लेंड वो लिखा था, बैंडेड। रिफ्रैक्शन होगा ना, yeah, नहीं it's नहीं रिफ्रैक्टिव। सर, you. सर मतलब वो ग्रामर लिखा था, बैंडेड हुआ था, तो वो भी चलेगा ना सर, लाइक? हाँ बिल्कुल, बैंड हुआ तो रिफ्रैक्शन हुआ ना। ओके सर। अब क्या है? What it is? सर इस वाले, Discuss the title sequence। देखो इतना ये जो यही कह रहे हो ना? यस सर। सर इसमें हम लोग क्वेश्चन जो समझ में आया, मैं आपको बताऊं क्या? अगर वही है सही तो आप बताइए। और कोई क्वेश्चन और क्या है? फिजिकल लाइट ट्रेवल और कुछ है? व्हाट द फिल्म बेस्ड ऑन प्रोग्राम, और क्या? अच्छा अभी एमसीक्यू कर लें जो बचा। व्हाट टर्म प्रोग्राम पॉपुलर इन इंडिया टेलीविजन, चलो एक सेकंड रुक जाए। और कुछ बचा हुआ कोई क्वेश्चन? सर फिल इन द ब्लैंक्स और कोई नहीं। एमसीक्यू है सर। एमसीक्यू क्या है दो ही एमसीक्यू? होंगे सर, इनका इंटरनेट पे ढंग से नहीं हो रहा है। फिफ्थ वाला। इधर सर फिफ्थ वाला तो रोमांटिसिज्म बहुत इज बहुत छोटा डिस्प्लेड सा बाय विच डाउट होगा। इंडियन सोसाइटी, स्कूल ऑफ पेंटिंग। यस सर, इसका इंटरनेट पे ढंग से नहीं सर है। ये आ नहीं रहा इसका आंसर गूगल पे भी। ये है भाई, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से है तुम्हारा, वो जो जिन्होंने भारत माता को वो बनाए थे वही तो थे, बंगाल स्कूल ऑफ सर आर्ट। इसको इसको नंदलाल किया बोस। सर, सर इसको क्या? सर्च किया, बट नंदलाल बोस। नो नो, देयर आर मेनी पेंटर्स, बट सर हमने इसको सर्च किया है, हम्म, बट इसका मतलब रोमांटिसिज्म के लिए पूरा एकदम डायरेक्ट नहीं बताया। बिल्कुल बताएगा रोमांटिसिज्म के लिए डायरेक्ट। अब सिंपल से बताओ, यू नो व्हाट इज रोमांटिज्म? सर छायावाद, छायावाद। नहीं, छाया, जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज रोमांटिज्म, व्हाट इट इज। सर रोमांटिक स्टोरी डिपिक्ट करता है। नहीं, गलत, रॉन्ग। ये हमें सेंसुअलिटी अभी, ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। या ये भी है नेचुरल, वो भी है। तो बेसिकली क्या था, दिस वाज अ मूवमेंट फॉर आर्ट म्यूजिक लिटरेचर, उसके लिए जो मूवमेंट था, दैट्स द रोमांटिज्म, टू शो द हीरोइक थिंग्स, राइट? जो पुरानी कथाएं, जो कुछ हीरोइज्म को दिखाता, दैट वाज द रोमांटिज्म। उस वर्ड को हमने यहाँ पर यूटिलाइज कर लिया, दैट वाज द रोमांटिज्म। सर राधा कृष्ण है तो उसी में आया ना। बाद में हमने उसको यूज किया आएगा, बट रोमांटिज्म इज काइंड ऑफ हीरोइक थिंग्स, कृष्ण के हीरोइक एलिमेंट्स को दिखाते हैं ना। चीजों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। हाँ, थोड़ा सा द बेटर, मतलब थोड़ा बिगर देन ब्राइटर, नॉट द करण जौहर, बट लाइक दैट। दैट्स द रीजन इन रोमांटिज्म, तुम देखोगे दे आर यूजिंग वेरी वाइब्रेंट कलर एंड दैट काइंड ऑफ थिंग्स ना। नाट्य बेसिकली धर्मी क्या सर। था, ये क्या था कि बहुत सेंसिटिव, बहुत इंटेंस वो उस पे काम होता था, राइट?
है ना, जो इनके बट इंटेंस इमोशंस और ये सारी चीजों को दिखाने के लिए, दैट्स द वर्ड यूज, रोमांटिज्म, है ना। सर तो कांगारा स्कूल ऑफ पेंटिंग पे आएगा ना? मुझे यहाँ तक लगता है, बिकॉज मैंने कहीं पढ़ा था रोमांटिज्म में, वो जो बंगाल स्कूल के वो थे, अब अरे वो उनका रविन्द्रनाथ टैगोर के जो वो थे भाई। रविंद्रनाथ हाँ टैगोर। हाँ, वो वहीं से थे, जिसमें कि भारत माता और वो सब का जो बना है ना। सर बट राजा रवि वर्मा ने भी तो बनाया है। और राजा रवि वर्मा ने भी बनाया है। सर बट वो बंगाल स्कूल में नहीं आते। बट बंगाल स्कूल को कहा जाता है बेसिकली, रोमांटिज्म के लिए बंगाल स्कूल को ही कहा जाता है। सर कैन वी यूज एलिमिनेशन मेथड, लाइक वॉरली पेंटिंग तो ऑब्वियसली नहीं है, कांगड़ा भी नहीं है, सो शेखावत या हैव नो आइडिया एंड बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट ही है, आई थिंक बंगाल स्कूल कांगड़ा आर्ट ही क्यों होगा, नहीं है? बिकॉज कांगड़ा क्यों नहीं है? सर बंगाल कैन बी कंसिडर्ड एज द इंडियन मूवमेंट। इंडियन। तो इंडियन आर्ट मूवमेंट है, मतलब बाकी सब बाकी बाहर से इन्फ्लुएंस्ड है, बट बंगाल स्कूल जो है। सर इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, इसलिए हम लोग ने क्वेश्चन किया। नहीं नहीं, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट है आई थिंक। मैं तुम्हें और इसे क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैंने कहीं रोमांटिज्म का जो मैंने पढ़ा था कि वो यही था कि ये बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के जो दो तीन लोग थे, उनका उनके पेंटिंग के बारे में बेसिकली मैंने पढ़ा था कि वो रोमांटिज्म से ज्यादा वो थे। इवन कि तुम्हें ये भी कहा जाता था कि ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ये भी इसी से इंस्पायर्ड है, रोमांटिसिज्म से इंस्पायर्ड है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ना। तो खैर इसके बारे में डिटेल दे दूंगा, अगर इसमें इस क्वेश्चन को मुझे फिर से मार्क करके भेज दीजिए, बट मुझे लगता है ये बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट ही है। राइट, दैट वाज। अब कौन सा क्वेश्चन है भाई? सो फिफ्थ वाला पे। फिफ्थ। What term describe a cartoon film script depicting scene and action? सर इसमें स्टोरी बोर्ड है, बट हम लोग को जानना था टून प्ले क्या होता है। सेकंड स्टॉप एक्शन तो वो हो गया तुम्हें, टून प्ले नहीं भाई, टून प्ले मैंने भी पहली बार सुना है भाई। सर नेट पे भी कुछ नहीं मिला था खास, तो इसलिए कंफ्यूजन हो गया था। What term describe the cartoon film script depicting scenes and action? हाँ, रुको रुको, ये मिलेगा तुम्हें, ठीक है, ये मिल जाएगा। ये गूगल पे नहीं मिलेगा तुम्हें, यू वॉन्ट फाइंड इट ऑन गूगल। ये दोनों क्वेश्चंस जस्ट मार्क इट एंड मुझे भेज दो, मैं इसका आंसर तुम्हें दे देता हूँ। ये तुम्हें मिलेगा जो 3D एनिमेटर्स होते हैं ना, और एनिमेशन वालों से यू फाइंड द आंसर, वहां मिलेगा ये। बिकॉज स्टोरी बोर्ड, द थिंग्स यू सीन एन एक्शन स्टोरी बोर्ड पे होता है, बट समहाउ वो हर एक फ्रेम को ना ड्रॉ करते हैं उस पे, राइट। तो समथिंग दैट्स अ डिफरेंट, कार्टून फिल्म स्क्रिप्ट में ना कुछ ड्रॉ करते हैं वो लोग अलग से, स्टोरी बोर्ड सकता है, बट कुछ स्टॉप एक्शन कुछ, some there's a different technical name, is a kind of a storyboard, the technical name is different, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट टेक्निकली इसका नाम दूसरा है। ओके सर, बता सर देना। अगर स्केच होता तो स्टोरी बोर्ड मतलब हम लोग कर देते, पर कार्टून लिखा है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। हाँ नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, ये नहीं है, तो वो क्वेश्चन से ही दिमाग लगा के पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है सर, ठीक। ये मैं बताता हूँ, ये मैं किसी उससे पूछते, गूगल पे ऐसे नहीं मिलेगा ये इन लोगों का अपना ना जैसे कि कैमरा में वी आर यूजिंग सर्टेन टेक्निकल वर्ड, राइट, जो कि कहीं ग्रामर में नहीं होता ना। इन कैमरा many of us using certain technical grammar of it, जो कहीं किसी ग्रामर में नहीं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में नहीं है, राइट, एंड वी आर यूजिंग इट, सो समहाउ। नहीं, रिगिंग इज समथिंग डिफरेंट। रिगिंग होता है उस कैरेक्टर के जेस्चर पोस्चर को वो करना, दैट्स द रिगिंग। जब कार्टून कैरेक्टर तैयार हो गया ना, आफ्टर दैट व्हाट एवर द जेस्चर्स एंड मूविंग जो होता है, दैट्स कॉल्ड द रिगिंग, है ना। सो ये हो गया, चलो इसको देखते हैं। और क्या था तुम्हारा बेटा? जस्ट गिव मी 1 मिनट। इसका क्या पूछ रहे थे, इसमें से किसका था? टीवी प्रोग्राम का?
What was it? सर ये फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है हम लोगों ने जो समझा है मैं एक बार आपको बता देता हूँ क्या वही है इसका क्वेश्चन का मतलब कि कुछ अलग है. हाँ सर What फिर are तो film-based program popular on Indian television? Just बताइए. सर इसका मतलब हमने समझा है कि जो टेलीविजन शोज फिल्म जो मतलब पहले कोई सिनेमा में फिल्म रिलीज हुई और फिर उनके ऊपर टेलीविजन शोज कोई बने Yeah. तो उनकी पॉपुलैरिटी इंडिया में क्यों ज्यादा है उसके ऊपर लिखना है. हाँ. तो यही पूछा है ना मतलब Why are हम. film-based program popular on Indian television? नहीं. सर तो क्या फिल्म से रिलेटेड, राइट? जैसे सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, व्हाट व्हाई आर फिल्म बेस्ड प्रोग्राम popular on Indian television? Read it carefully, you got your answer. Why are film based program, the program that is based on films, जैसे कि अन्नू कपूर के प्रोग्राम आ गया अंताक्षरी, राइट, इज बेस्ड ऑन फिल्म्स. आए, फिल्म से रिलेटेड होते थे, स्टोरी सुनाता था ना भाई, फिल्म से रिलेटेड स्टोरी और चीजें. Yes, sir. इज इट डूइंग और नॉट? Sir, they are meaning that the, the the TV programs that which are moving on related to cinema like that. वेयर सर वेयर जैसे इज शेरलॉक होम्स का एक मूवी थी फिल्म था और उसके बाद वो बेनेडिक्ट तो कम्बरबैच का आया था. रुक वो पूछ रहा है व्हाई आर फिल्म बेस्ड प्रोग्राम, फिल्म के Sir, ऊपर जो प्रोग्राम बेस्ड है, द they are फिल्म के not ऊपर व्हाट एवर द प्रोग्राम दैट इज बेस्ड ऑन और इंडियन टेलीविजन की बात कर मूवीज, रहा है. राइट? sir that they are these क्या? programs are not shows. हाँ, दैट प्रोग्राम, दैट्स व्हाई आई एम बोलिंग दैट्स द प्रोग्राम. द टीवी प्रोग्राम इज व्हाट? Yeah, फिल्म बेस्ड movie प्रोग्राम. related discussion like that. ये प्रोग्राम कोई भी हो सकता है. फिल्म बेस्ड प्रोग्राम इज व्हाट? ये एपिसोड नहीं पूछ रहा है, सीरियल नहीं पूछ रहा है. सर अर्ली टाइम में वो The सॉन्ग्स वाला एक शो आता था जिसमें मॉर्निंग में सॉन्ग्स आते थे दूरदर्शन पे. no they are, I think they are trying to mention the interviews and like that. It's the discussion about movies in TV. The discussion about films and the related to film based Yeah, programs, it should be the related to the films. तो yeah, either because the was the name of that आशुतोष राणा की जो वाइफ थी यार, वो प्रोग्राम निकालती थी एक. because naturally the people That in you can India. see. Look. Just. I'm just briefing of it. Have you seen the show of Anupama Chopra? यस सर फिल्म कंपेनियन वाला. Have you seen that the वो जो लड़का है यार, बहुत MTV वाला जो जिसमें सेलिब्रिटीज आता है, that yeah. राउंड टेबल डायरेक्टर राउंड. वो था, फिर ऐसे बहुत से हैं वो जिसमें बहुत सारा रोस्ट करता है यार, दैट काइंड ऑफ शो MTV का जो है. अनुपमा चोपड़ा की फिल्म देख लो तुम, कोमल नहाता का देख लो, राइट? दैट इज फिल्म बेस्ड प्रोग्राम. बेसिकली इट्स नॉट द इंस्पायर्ड बाय द फिल्म. फिल्म बेस्ड मींस कि ये फिल्म्स के ऊपर ही है. इसमें फिल्मों के बारे में दे आर Like टॉकिंग अबाउट द फिल्म्स ओनली. yes, दे विल टॉक अबाउट criticizing द and फिल्म्स ओनली, राइट? yeah. सो दैट्स द थिंग्स, फिल्म बेस्ड प्रोग्राम. नॉट द ऐसा होता है ना, तो ये होता है कि इंस्पायर्ड बाय द फिल्म्स, और लाइक वो क्या हमारे यहाँ क्या होता है, इंस्पायर्ड होते हैं, और एक क्या होता है, हम लोग वो कॉपी नहीं करते यार, इंस्पायर्ड होते हैं ना. हाँ, तो दैट काइंड ऑफ वर्ड यूज करते हैं ना कि भाई कोई ऐसा बताओ. इतने कितने हमारे यहाँ ऐसे कौन से हैं, तुम्हें याद भी है कोई एक सीरियल बताओ जो बहुत पॉपुलर हो? So how should we answer, sir? Like the The cinema is film based सर popular program, इसका among. first liner answer is, why are film based program popular on Indian television? Because we are filming buff, movie buff, right? We wanted to know about the stars by the nearby, because in films there is not their real character, right? But once the film based Yeah, programs, we can get connected to those characters, right? To know about their things, right? You can get connected with those stars and their lives and everything. That's the things, no? Because in film, they are just the character, right? In film, Shahrukh Khan is not Shahrukh Khan. But in some talk show, what happens? Shahrukh Khan is Shahrukh Khan. So you are the connection, that's the connection. That's the reason. The one जो सबसे
बिगेस्ट आंसर पॉइंटेड होगा, दैट इज द कनेक्शन, दैट्स द रीजन। आई थिंक यहाँ समझ गए इस क्वेश्चन का मतलब, अनुभव? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन जस्ट रीड इट केयरफुली, यू गॉट योर आंसर। कह रहा है फिल्म बेस्ड प्रोग्राम, ये फिल्म के ऊपर जो प्रोग्राम बेस्ड है ना? तो ऐसे तुम ही बताओ, चलो चलो एक चीज, तुम अभी खुद इसका आंसर नहीं, यू कैन आंसर इट। नेम at least 5 television show that is based from film, right? फिल्म से कॉपी करके बनाया हो। फिल्म बेस्ड प्रोग्राम क्या होता है? या तो फिल्म से कॉपी हुआ होगा, राइट? बताओ 5 प्रोग्राम बताओ मुझे। सर एक ये तो 5 सीरीज, शेरलॉक होम्स। शेरलॉक होम्स का, और बताओ। इंडिया पूछा है, इंडिया, इंडियन टेलीविजन, और बताओ। याद करना पड़ रहा है ना? अब मैं सर तुमसे पूछता रामायण हूँ। बोल सकते हैं, रामायण का भी हुआ था, मतलब वो तो बाद में आया था ना टीवी। रामायण तो पहले, तो रामायण तो फिल्म बाद में बनी है। रामायण तो, अब तो तुम कहोगे सीरियल बेस्ड फिल्म कौन सा है? पहले तो उन्होंने बना दी ना रामायण, ही हैड ऑलरेडी मेड रामायण, उसके बाद रामायण पे अब बन रहे हैं ना फिल्म्स। नहीं सर, पहले भी उनकी स्टोरी पे तो मूवीज बनी है। नहीं, रामायण की स्टोरी पे प्योर रामायण कहाँ बनी है? रामायण वाज ओनली सीरियल, पहले सीरियल बनी है, ऐसा कोई ऑथेंटिकेशन नहीं फॉर द फिल्म्स। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द, व्हेन वी आर गिविंग आंसर, देयर शुड बी द ऑथेंटिकेशन। तो तमस तमस। तमस, तमस किस किस सीरीज पे बनी, किस फिल्म से लेके बनी? तो गोविंद निहलानी की थी ना तमस। हाँ, उस पे क्या बना, उस पे क्या बना, किसने बनाया फिर? सर टीवी शो था, दूरदर्शन पे आता था। मैं तो कर, फिल्म कौन सी बनी उस पे पहले? सर तमस, नाम ही तमस का सर, गोविंद निहलानी। वो मैं समझ गया, अभी जो ये आंसर करो तो मैं समझ गया, सीरीज बनाया तमस, वो तो गोविंद निहलानी का सीरीज था तमस। तुम लोग जो कंफ्यूज हो रहे थे ना कि वाया द फिल्म बेस्ड प्रोग्राम, कि फिल्म के ऊपर जो बेस्ड प्रोग्राम है वही की बात हो रही है, राइट? बट अभी मैं तुम्हें कहूँ कि फिल्म के ऊपर जो प्रोग्राम बेस्ड है, राइट? अगर मैं ऐसे 5 प्रोग्राम्स के नाम तुमसे पूछूं, वी कैन आंसर इट इजली। मैंने कोमल नाहता का एक शो बताया, टॉक शो ले लो कोई भी ऐसे, ये ज्यादा पॉपुलर है या नहीं है अभी, है ना? तुम लोगों को क्या लग रहा था, किसी फिल्म से इंस्पायर्ड होकर जो बनाया जाता है वो फिल्म बेस्ड, दैट यू आर थिंकिंग? यस सर, यस सर। सर मैंने पहले वही लिखा था कि तो तमस किस फिल्म से बेस्ड था? गोविंद निहलानी की है शायद सर तमस। वो उसकी सर फिल्म तमस थी, गोविंद निहलानी की फिल्म है, हाँ सर। उस पे सीरियल बनाया। वैसे तो नॉट बुक सर पे है सीरियल। सर, वैसे तो बुक पे है, भीष्म सहानी की बुक तमस पे है। तो फिर ये कैसे हो गया वहां से? Sir, here they have not mentioned any period or any television network names, and also we can write regard the current TV shows that करंट happening टीवी based शो on. ऑब्वियसली ना। ये कह रहा है व्हाई आर फिल्म बेस्ड प्रोग्राम पॉपुलर ऑन इंडियन टेलीविजन? Yeah, we should write the why because the cinema is popular and people likes to hear and talk about cinema, and like that we should write it, and we should give some few names that we know. Few, like the few some series name that you can ask, that when that one reason that I have explained it to you, because in movies we are not getting the real information about our star, right? But why this like Kapil Sharma show is so popular? The reason is a star came over here. The star nahi aata to only comedy. There is a comedy circus. There is a many kind of serials is going on. Many kind of comedy series is going on. The one reason behind the success of Kapil Sharma show is the star, right? Is it right or not? सर ये सर ये बड़ा ही सब्जेक्टिव है। अगर उनको ऐसा लिखना होता तो फिल्म टॉक शो लिख सकते थे, फिल्म टॉक शो टीवी प्रोग्राम। ये लिखा हुआ फिल्म बेस्ड प्रोग्राम तो लिखा हुआ है, अब उन्होंने वर्ड यूज नहीं किया। Why are the film based program popular on India? अब फिल्म बेस्ड प्रोग्राम क्या हो सकता है? एज पर माय कंसर्न मुझे तो यही लग रहा है कि फिल्म से रिलेटेड वॉट एवर इट इज, दैट प्रोग्राम, है ना?
बिकॉज वैसे तो कुछ इतना पॉपुलर नहीं है। बाकी कौन से ऐसे शो है इंडिया में जो पॉपुलर है? कहानी सास भी कभी बहुत ही सबसे ज्यादा पॉपुलर है। कौन से फिल्म बेस्ड है? कहानी घर घर की पॉपुलर है। तारक मेहता का उल्टा उल्टा चश्मा पॉपुलर है, राइट? अगर मास में जाओगे ना, इंडियन पॉपुलैरिटी की, नॉट द इंडिविजुअल, राइट? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन शो, यही तो 5-6 शो हैं जो चल रहा है। नागिन, जाके टीआरपी देखो। सर एक वाइस वर्सा हुआ है, जैसे खिचड़ी का बोल सकते हैं, लेकिन वो खिचड़ी पहले टीवी शो थी, फिर बाद में मूवी है। तो कैसे हुआ ये? अगर तुम जो सोच रहे हो उसके हिसाब से तो फिल्म शुड हैव ऑलरेडी मेड एंड देन यू मेड अ serials on it, right? Then it's become popular like that, right? जो तुम्हारा आंसर है वो तो ये होना चाहिए। यस। बट वो इतना पॉपुलर हो ही नहीं सकता। ऑलरेडी यू हैव वॉच्ड फिल्म, उसके ऊपर सीरियल देखोगे तुम? तो 3 घंटे पूरी कहानी पता है, बड़ा सिंपल है। इन 3 वॉचिंग 2 hours of things you got to know everything। अब बैठ के तुम हर एक आधे आधे घंटे का एपिसोड देखोगे? बिंज वॉचिंग के जमाने में इतना वेट कौन करता है? नहीं ना, और बहुत कम शोज हैं ऐसे हैं। सो फॉर व्हाट आई नो, मुझे जहां तक लग रहा है इट्स अबाउट द फिल्म शो, राइट? ओके सर। ओके डियर, थैंक यू एवरीवन। सर आई एम गेटिंग लेट फॉर सम, ब्रेक भी नहीं दिया है, सो आई हैव टू गो समवेयर। Thank you, sir. Okay, if you guys have any question related to this class, just drop me message. ओके सर, ओके। Sure. Okay. सर बस थर्ड वाला क्वेश्चन आप कभी बता देंगे तो हम लोग आ जाएंगे।